Hi guys, today I'm back with IELTS 9th November exam reading answer key. If you gave that exam on 9th November, please go over this video and look at the answers, and if you think that the some of the answers are wrong, because these all are answers we collected from the students. अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है, then please write down in the comment section, then definitely we will review that again. And now let's get started. But before that, if you are new on this channel, please do subscribe this channel if you want to do free speaking. जी हाँ, अगर फ्री स्पीकिंग आपको करनी है हमारे साथ, then you need to subscribe this channel and like this video and share this video with your friends. Now let's get started with the answer की very first जो आंसर था आपका था वो true, TRUE. Number 2 था false, FALSE. Number 3 था false, FALSC. Number 4 false. Number 5 not given. Number 6 is true. Number 7 is true. Number 8 is not given. Number 9 is not given. 10 is true. 11 is light. 12 is cosmetics. 13 is carpet. 14 is eyes. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको आई लिख के आए हैं. द आंसर वॉज EYES. यस. और एग्ज़ाम के अंदर अगर आप एस या ES लगाए या नहीं लगा के आए तो भी आपके, अगर क्वेश्चन के अंदर के आपको लाइन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर आपका कारपेट जो है अगर सिंगुलर है तो या प्लूरल है, तो अगर आप एस या ES नहीं लगाते तो आपका आंसर वो गलत होगा, इवन दो आपने कारपेट पूरा ठीक लिखा है. तो CARPETS carpet, EYES eyes. Number 15 is drawing. Number 16 is perfume. Number 17 is clothes. Number 18 is 14,000. Number 19 is dark color. Number 20 is famous. FAMOUS. Number 19 is yes. So number 20 is yes. 21 is yes. 22 is no. 23 is yes. 24 is yes. 25 इज़ अगेन नॉट गिवन. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत रहता है कि हैंड राइटिंग का. जी हाँ, हैंड राइटिंग अगर आप गंदी करके आए हो अपने एग्जाम के अंदर, डर्टी हैंड राइट के भी मार्क्स जो है वो आपके कटते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट वाइल यू आर राइटिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को टिप्स चाहिए होते हैं कि राइटिंग कैसे करके आएँ, कैसे अपनी हैंड राइटिंग को सुंदर बनाएं, तो उसके लिए भी एक टिप मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगी. 26 इज़ नो. 27 इज़ नो. 28 is not given. 29 is yes. 30th is yes. 31 is second. 32 is third. 23 is 5. 34 is 6. 35 is 1. 36 is 4. 37 is 5th. 38 is 9. 39 is 10. And 40th is 8. So these all are the answers for your IELTS reading एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 9th November 2023. अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया था तो रिव्यू ज़रूर करें आंसर की को. अगर कुछ गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं. अगर स्पीकिंग आपको फ्री हमारे साथ करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द IELTS एग्ज़ाम रिजल्ट.